त्यांचा मृत्यू झाला असावा। पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आता थेट पाकिस्तानच्या जनतेला आवाहन केलं। दहशतवादाला पोषणारं पाकिस्तानचं सरकार आणि लष्कराविरोधात तिथल्या जनतेला आवाज उठवावा लागेल। भाकरी खा सुकाना जगा अन्यथा आमची गोळी आहेच असं पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी गुजरातमधल्या भुजच्या सभेत पाकिस्तानला ठणकावून सांगितलं। दरम्यान ऑपरेशन सिंदूर नंतर नरेंद्र मोदींचं बडोद्यामध्ये जोरदार स्वागत करण्यात आलं। पाकिस्तान को आतंक की बीमारी से मुक्त करने के लिए पाकिस्तान के अवाम को आगे आना होगा, पाकिस्तान के नौजवानों को आगे आना होगा। सुख चैन की जिंदगी जियो, रोटी खाओ, वरना मेरी गोली तो है ही। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा महाराष्ट्राच्या दौऱ्यावर होते। नागपुरात सकाळी नॅशनल फॉरेन्सिक